गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम चले आज सापुतारा। So guys, I have come to this junction JVLR and I'll be waiting for my friend Subesh to come and join me, and then we'll be moving ahead. 7 बज चुके हैं और अब हमारी राइड स्टार्ट हो रही है। That's Subesh driving in front of me. Vinod is waiting for us at the end of this road. So that's Vinod in dark green sweater in front of me. वो आके कितना टाइम वो आके 15 मिनट हो गया। चलो चलो, सही है यार, सही है। तो अभी हम ठाणे पहुंच रहे हैं। So we have just finished our breakfast and we are moving ahead now. We are about to reach Nashik now. Oops, had to take a left turn. It's almost 2:30 now and we have finished our lunch. We are about to reach Saputara now.
Guys, it's pitch dark right now, and I don't think camping will be successful. So, luckily, we have got a contact from Shubhesh's elder brother who works in Gujarat Tourism. So, he has a contact in Saputara here, and he has agreed to give us a place for camping inside a deserted villa, and we are right now going there along with him. And we hope to spend a night there inside this deserted villa kind of thing. बाइक इधर ही लगाना पड़ेगा। Guys, we are moving towards Bangladara now. नासिक का लोकेशन डालूं कि डायरेक्ट भंडारदरा डाल दूं? नासिक में तो लंच करना है ना, नासिक का ही डालता हूं। नासिक एंटर करते ना फिर मैं कैरी कर लूँगा, वो होटल में जाना है इसीलिए। लाकडं कुठं भेटतील इथे? लाकडं हां, जाळायला वाडीवर मिळतील. वाडी कुठं? पुढे जाताना रोडला वाडीवर मिळतील. विकतात तिथं ते? हा, रोडच्या बाजूला. बरोबर. किती लांब असेल इथून? 1 किलोमीटर रोडच्या बाजूला. लकडे लकडे। तो बॉनफायर करना था, तो लकड़े चाहिए थे, तो हम एक पास वाले गांव में आ गए हैं लकड़े कलेक्ट करने और वेट कर रहे हैं अभी। चला। हाँ, नहीं कुछ नहीं है। से लगा पता नहीं क्या। कुछ नहीं, कीड़ा वीड़ा भी नहीं है इधर। नहीं नहीं नहीं, चल चल। ठीक है चल।
What a beautiful place, guys. So this is the place where we camped yesterday night. हे विचारलं का? त्याची रिम बेंड झाली आहे. Started our return journey now. ये भिवंडी का हमेशा का ट्रैफिक जैम. So I'm back to this concrete jungle in Thane right now. So guys, I'm about to reach my home and it was an exciting 2 days of camping. Bye.